Hello everyone. So previously we have discussed some functions in Python like print function, input function, id, type and assignment statement. So in this session we are going to discuss different data types in Python, their conversion in different data types, mutable and immutable types and comments in Python. So yeah, let us start with data type topic. So, the aim of studying this topic is to help you in identifying different data types in Python and give you intro of them. Since हम लोग जो data types है like string and list that we are going to discuss later, वो लोग हम detail में पढ़ने ही वाले हैं. So it has aim to basically help you in identifying them and make you comfortable with them and giving intro of them. So let us see different data types in Python that Python provide to us. So in mathematics, you have studied about the integers, floating numbers. Floating numbers means decimal numbers and complex number. Like in mathematics जो आपको जो different numbers मिला करते थे यार, like integers, floating number, complex number, real number. In a similar manner, Python provides us different data types so that we can use them according to the need of the program that we are writing. So let us see which data types how many data types and what types of data Python provide to us. So in the numbers part, Python provide us integer data type. These are similar to the integers that you have studied in your mathematics, like -1, 0, 2, 1, and so on. Basically, negative numbers, positive numbers, and 0. But these are not decimal numbers. The decimal numbers are the part of the floating numbers. So basically, floating points means decimal numbers. It means decimal number. So I write it for you here. Decimal number. So yeah. And complex number you may have studied in your earlier classes. So the complex number is similar to that, like 3 plus 4 iota. This 3 is a real number. This is a real part. This is the imaginary part. This is a complex number you may have studied earlier. If you have not studied, then you don't need to worry because this is not going to be much used for now. And and there is another part of none. None means there is nothing. It doesn't mean zero and false anything. It means there is absence, complete absence, like vacuum. We will discuss it. In sequences, we have a string, we have tuple, we have list. In mappings, we have dictionary, and we also have a boolean data type. Boolean data type क्या होते हैं यार? It's true or false basically. Is it? So let us move on to their definitions so that आपको easy हो जाए. This is just for giving you a small intro. Now let us move on to the main part. Yeah, one thing I missed here is sequence में we also cover set. We are also going to cover set. So these five data types like string, tuple, set, list, dictionary, we are going to cover all these five data types in detail. इंटीजर्स एंड फ्लोटिंग पॉइंट से आप लोग ऑलरेडी फेमिलियर इन मैथमेटिक्स so there is not much new in them. And the boolean part we have true false. Let us see them now. This is decimal number.
So yeah, our first data type that we are going to discuss is integers. So I will open my VS Code so that I can give you examples of them simultaneously as I told you with the PDF. So let us remove this things. Yeah. So integers in Python are represented by the int class. Now what is this int class? I will show you. Wait for a while. They contain positive or negative whole numbers, including zero. Yeah, whole number itself means it includes zero. Without fraction or decimal. So there is nothing new in that. I felt you are already familiar with integers. So let me give you an example for this. If I write a is equal to 9, so 9 is an integer. And earlier we have studied the type function, so I will use that to find the type of the a. Print type of a. Let me run this code. Yeah, I found class int. So in Python जितने भी ये डेटा टाइप्स है इनको क्लासेस बोलता है. ये सारी क्लासेस हैं in Python. Classes we will understand better in the object oriented programming. So अभी आप यही समझ लो यहाँ पे क्लास का मतलब डेटा टाइप है. बट इसका मतलब डेटा टाइप होता नहीं है एंड वी विल डिस्कस इट इन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पार्ट. So for now, you can understand it as a data type. So yeah, it write class is equal to int because this 9 is a integer. Let me change this. I will do it -9. I will delete this. Now I will rerun this. And again, its class is the integer because again -9 is an integer. So yeah, this is class int. Now we will see the float. Also in Python there is yeah, in the integer part. Also in Python there is no limit how long an integer value is. I have write there 9. आप लोग यहाँ पर 9 लाख 9 करोड़ आप कितनी भी वैल्यू जितनी आप सोच सकते हो आप उतनी लिख सकते हो. पाइथन में कोई ऐसी लिमिट नहीं है. Is it? So I will give you an example for this also, like 9 5 4 4 7 8 2. So if I still run this, it also gives me class int again. Is it? So you can add more numbers here in A. So I hope you understand this. Now in float, the Python represent it by the float class. In Python, it represented by the float class. I told you earlier that float means decimal values. Decimal values. So let us see this in Python. I write a is equal to 9.98. I run this code and I got class is equal to float. So yeah, this is of float class. So any decimal value is belong to the float class in Python. You can also have a negative decimal value like -9.98. I will run this code. I again get class is equal to class float. So yeah. See, the now complex number again are represented by the complex class. But जो हम लोगों ने
इंटीजर के लिए करा, जो हम लोगों ने फ्लोट के लिए करा, वैसे हम लोग इसका टाइप नहीं चेक कर सकते हैं। व्हाई? बिकॉज कॉम्प्लेक्स नंबर हमें क्रिएट करने के लिए पाइथन के अंदर वी नीड टू import a library in python, and now you don't know about the library, so I'm not talking about that. But you must note it down कि आप लोग इंटीजर और फ्लोट क्रिएट कर रहे थे पाइथन में, उतना सिंपल नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर क्रिएट करना. यू नीड टू import a library in python. We will discuss it in the module and library part, so you can skip the complex number for now. And we will move on to the next data type, that is boolean. See, in boolean there are two values, only two values, true and false. Like human language में हम लोग अगर हमें कुछ काम करना होता है, we just say yes or no. Similarly in python में true और false होता है. I will show you this in VS Code again. Now see, python में, as I told you, पाइथन में जो लोअर केस है एंड अपर केस है, दैट मैटर्स अ लॉट. सो जो ट्रू लिखना है ना पाइथन में आपको बूलियन का, दैट इज कैपिटल टी आर यू ई. कैपिटल टी एंड स्मॉल में आर, यू स्मॉल में, यू स्मॉल में ई. इज इट? अगर आप लोग ऐसा लिखते, लाइक टी आर यू ई, then this true in which all the letters are capital, this true is not the boolean. This don't belongs to the boolean class in python. So this true in which in which the first letter is capital and all other letters are in lowercase, this true belongs to the boolean class. I will run this code to show you its class. So see, its class is bool. And if I write capital F and all other letters in small, in lowercase, and if I will run this code again I get the class as bool. So I will also show you कि if मैंने लिख दिया होता कैपिटल में टी आर यू ई, तो पाइथन आपको एरर दे देगा, सिंस ये कोई भी डेटा टाइप नहीं है. So see, we have got the error here. The name error we have got here. They are saying that name true is not defined in Python. Did you mean this true? जो कि Python में exist करता है bool में. So this was something important you need to understand. I will mention it here also in presentation. So here we have T. Here we have T. This true. Oh, yeah. Let me write it. Yeah, this true. And this false is the bool, is the boolean, is belong to the bool class in python, this true and this false. So here I have the none type. A none type has only one value, none. None means absence of anything. It means absence absence of anything. It means यहाँ पर कुछ भी नहीं है. Absence है, complete absence है, it means complete absence. Like you have heard vacuum in science. आपने साइंस में वैक्यूम के बारे में पढ़ा होगा. So it is similar to that. यहाँ पर कुछ भी नहीं है. I will show you this. See, this is a theoretical topic. So उसमें ज़्यादा कुछ समझने का है ही नहीं. You just need to learn all these data types. A is equal to none. Also again,
capital N and other letters will be in small, then only it will be a valid none type. Let us run this code. I got the class none type, and again if I have written this none, then Python will again give us the error. Yeah, this is the error that we got again. Name none is not defined. Did we mean none? Did we mean this type of none with capital N and others in small letter? So yeah, let us move on to the string now. So something interesting has been started now for you. Since integers you have already studied, float you have already studied, complex number you have already studied in the class, and also complex number तो हम लोग create कर ही नहीं सकते हैं in Python without importing any library. So we will study about the library later. So I have told you to skip this. And we have studied about bool till now. We have studied about none type. Now let us study about string. So what is string? String is just a collection of characters put in a single and double quotes, and it is represented by str class in Python. Str class. It means अगर मैं single quote में या फिर डबल कोट में मैं कुछ भी अगर लिख देता हूँ, दैट इज अ स्ट्रिंग, एंड इट डजेंट मैटर कि आप क्या लिख रहे हो इसके अंदर। आप इंग्लिश के अल्फाबेट्स लिख रहे हो, आप कोई नंबर लिख रहे हो, आप कुछ भी लिख सकते हो आप, या फिर सिर्फ गैप दे रहे हो, कोई सिर्फ स्पेस दे रहे हो, दैट डजेंट मैटर। अगर वो सिंगल या डबल कोट में है, देन पाइथन विल कंसिडर इट एज स्ट्रिंग, एंड स्ट्रिंग्स ऑपरेशन विल बी वैलिड ऑन दैट। So I will give you an example for this. See, this none was not valid. So if I put in double quote, now अगर डबल कोट के अंदर मैं ट्रू लिखूं, फॉल्स लिखूं, मैं कुछ भी लिख देता हूं, अगर वो डबल कोट के या सिंगल कोट के अंदर है, इफ इट इज इनसाइड सिंगल एंड डबल कोट, सिंगल और डबल कोट, then it will be a string type. Let us run this code, and I got class str. Str here means string. So it is a string data type now. Let me write 99 here. If I will run this again, class is equal to string. And अगर मैं ये double quote हटा देता, if I remove these double quotes and if I run this code now, then I have got the class as int. सो अगर मैं किसी भी इंटीजर वैल्यू को सिंगल डबल कोट में डाल रहा हूँ, देन इट इज गिविंग मी द क्लास एज स्ट्रिंग, बिकॉज इट डजंट मैटर फॉर द पाइथन कि आप सिंगल या डबल कोट में क्या डाल रहे हो। इफ इट इज इनसाइड सिंगल और डबल कोट, देन इट इज स्ट्रिंग टाइप, then it belongs to the class string. So this hello we have go this hello belongs to the class string again, because it is inside the double quote. So as I told you, for now our aim is to learn how to identify these data types. So you can identify them now. अगर डबल कोट है सिंगल कोट है, then it belongs to the class string. अगर कैपिटल N है, O N E है छोटे में, यानी कि लोअर केस में, then it belongs to the none. If in this manner true or false लिखा हुआ है, true and false, then it belongs to the bool class. We have seen अगर कोई हमारे पास decimal number है, it belongs to the float class. Integer number, then it belongs to the integer class, int class. So yeah, now list. How you will identify list in Python? अ, अगर हमारे पास कोई भी नंबर्स, कोई भी, नॉट ओनली नंबर्स, कोई भी अगर डेटा स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है कोमा सेपरेटेड, देन इट विल बी ट्रीटेड एज द लिस्ट इन पाइथन, एंड ऑपरेशंस ऑफ लिस्ट विल बी वैलिड ऑन दैट. I will give you example for the list.
Let me write L is equal to square brackets. नो, लिस्ट की एक इम्पोर्टेंट बात क्या होती है दैट आप लिस्ट के अंदर डिफरेंट डेटा टाइप्स को एक साथ लिख सकते हो कोमा सेपरेट करके। लिस्ट दूसरे जो दूसरे डेटा टाइप्स है इस लिस्ट उनको भी कंटेन कर सकता है। आई विल गिव यू एग्जांपल फॉर दिस, लाइक हेलो इज अ स्ट्रिंग, वो मैंने लिस्ट में एज एन एंट्री डाल दी, एक इंटीजर एंट्री डाल दी 56, एंड अगेन एक स्ट्रिंग एंट्री डाल दी बाय। सो लेट मी चेक द टाइप ऑफ L, print type of L. So let me run this and I got class as list. सो बेसिकली पाइथन को अफेक्ट नहीं पड़ता है कि यार आपने अंदर क्या एंट्रीज डाली है, अगर वो एंट्रीज स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर है और कोमा सेपरेटेड है, मतलब कोमा सेपरेटेड एंट्री है, तो वो अलग अलग एंट्रीज हो गई, लाइक हेलो इज वन एंट्री, 56 इज वन एंट्री, बाय इज वन एंट्री। अगर मैं कोमा हटा दूंगा तो पाइथन विल इन कंसिडर देम एज अ सिंगल एंट्री। सो अगर पाइथन को स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर डिफरेंट एंट्रीज दिखती है विद कोमा सेपरेटेड डिफरेंट एंट्रीज, देन पाइथन विल कंसिडर देम एज अ लिस्ट, एज आई शो यू हियर in this example. So don't worry about all these things, since I already have told you that we are going to discuss all these data types in detail. This is just an intro, and for intro just memorize that कि अगर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर डिफरेंट एंट्रीज हैं then they will be considered as a list. So you just need to focus on the intro part, that how you will identify these data types. Now tuple, अगर जो डिफरेंट एंट्रीज एज आई टोल्ड यू इन द लिस्ट वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में थी, इन द केस ऑफ टपल वो इन पैरेंथेसिस इन ब्रैकेट्स के अंदर होगी। अगर स्क्वायर ब्रैकेट्स की जगह आपको ये वाले पैरेंथेसिस दिस ब्रैकेट्स दिखते हैं, देन इट मींस कि वो टपल का टाइप, वो इट बिलोंग्स टू द क्लास टपल। अगर मैं यहाँ पर एल जो हमने लिस्ट बनाई थी, अगर मैं यहाँ पर ये टपल वाले पैरेंथेसिस लगा देता हूँ, अगर मैं इन एंट्रीज को टपल के अंदर रख देता हूँ, इसको पैरेंथेसिस के अंदर रख देता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट्स हटाकर, and then if I will run this code to check the type of L, then what you are expecting? See, I am expecting the class tuple. Why? Because here the entries are inside these parentheses, and Python को जैसे ही इस टाइप के parentheses मिलेंगे, then Python will understand कि यार ये तो tuple है. This object belongs to the tuple class. So if I will run this, I got the class tuple. So yeah, in tuple and list there are more differences also, but and we will discuss them when we will discuss tuple and list in detail. Now in डिक्शनरीज में क्या होता है ना, आई टोल्ड यू कि यार ये मैपिंग का पार्ट होते हैं ना। व्हाट इज मैपिंग? सी, मैपिंग में क्या होता है ना यार, अगर आप लोगों ने फंक्शन में मैपिंग पढ़ी है, आप लोगों ने अगर आपने फंक्शंस पढ़ा है अपने अर्लियर क्लासेस में, उसमें आपने मैपिंग पढ़ी होगी, like here we have a function fx is equal to y. here यहाँ पर x की टर्म्स होती हैं, x की वैल्यूज होती है, यहाँ पर y की वैल्यूज होती हैं, एंड एक वैल्यू डालने में y मिलता है, दूसरी से ये एक दूसरा y मिलता है, इज इट? तो यानी कि इस फंक्शन में इसकी मैपिंग हो रही होती है। प्रोबेबली यू इफ यू हैव नॉट स्टडीड द फंक्शन देन इट वुड बी हार्ड फॉर यू टू अंडरस्टैंड, so I will give you another example.
फॉर एग्जाम्पल आप लोग ये समझ लो कि यार यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है। सो ये जो 1 2 3 है ये ए बी सी के रिलेटिव्स है। एंड जो ये ए बी सी हैं ये लोग जो हैं अपनी याददाश्त भूल चुके हैं, दे हैव लॉस्ट देयर मेमोरी। एंड जो एक पी है, ये पी एक पुलिस है, पुलिस ऑफिसर है। सो 1 जो है जब पी के पास जाएगा तो पुलिस उसे उसके जो खोया हुआ रिलेटिव है उससे मिला देगी। लाइक P1 will be equal to A. Similarly, P2 will be equal to B. So if you have not studied function in earlier classes, then you can understand by this example that P1 is equal to A. जो 1 था वो पुलिस के पास गया जो कि P है, तो उसने उसे A से मिला दिया। So P1 is equal to A, P2 is equal to B. Similarly जब 3 जाएगा तो P3 will be equal to C. दिस इज समवट मैपिंग हेयर। मैपिंग का थोड़ा सा आइडिया दिया मैंने आपको बेसिक। सो सिमिलरली डिक्शनरीज में होता है, डिक्शनरीज में 1 जो है वो ए से मैप्ड है, 2 जो है वो बी से मैप्ड है, 3 जो है सी से मैप्ड है। एंड दिस इज अ सिंटैक्स ऑफ क्रिएटिंग डिक्शनरीज इन पाइथन इन द कर्ली ब्रेसेस। हाँ, सो इन द कर्ली ब्रेसेस हम लोग इस टाइप से एंट्रीज क्रिएट करते हैं। हम लोग मैपिंग करते हैं, लाइक हमने 1 की मैपिंग ए से करी, 2 की मैपिंग बी से करी, 3 की सी से करी। इन दिस वे we create the dictionaries. I will show you this in VS Code. Let me create a dictionary for you. Dictionary. I did name. Name की मैपिंग मैंने कर दी. Let me take any name like Ram. And मैंने एड्रेस लिखा. एड्रेस की मैपिंग मैंने कर दी. लेट्स से मुंबई. या एड्रेस की मैपिंग कर दी मुंबई. सो now this is one entry name Ram. This is second entry address Mumbai, where हम जो नेम और राम की मैपिंग हो रखी है, एड्रेस और मुंबई की मैपिंग हो रखी है. When I will do print type of D, so what we are going to get, let me run this code. We are going to get class as dict, class dictionary. So in Python, dictionaries are represented by the dict class. I must mention it here. Dict class. Yeah. Similarly, list belongs to the class list. And similarly, tuple belong to the class tuple. Now let us move on to the set. Set are also represented with the curly braces, inside the curly braces. But here the difference is that कि यार डिक्शनरीज में मैपिंग हो रही थी, सेट्स में मैपिंग नहीं होती, डायरेक्टली सिंगल ऑब्जेक्ट हम लोग लिख देते हैं. इज इट? आई विल शो यू दिस अगेन ऑन द VS कोड. अगर मैं इन्हें हटा दूं, यहाँ पर डायरेक्टली लिख दूं 1,8,9, and if I will run this code to check its type,
It is of class set. I hope you are able to identify the different data types now. So don't worry about all these definitions that I have written here for you. Since we are going to discuss them in detail in different when we will study these data types in detail, we will go to these definitions. But at this moment, I am not going in deep in these definitions since it will be harder for you to understand. So basically, I will give you the summary of these data types. See, integers are like the integers are just same as the integers that you have studied in the mathematics. They are represented by the int class in Python. Floating numbers are the decimal numbers in the Python. They are represented by the float class. एंड एज आई टोल्ड यू कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हमें एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ती है so we will discuss this complex number part when we will studying the module 1, but I have mentioned it for you so that while revising the notes it will be helpful for you to revise it in one way, in one go. And yeah, so it is represented by the complex class. But note that ki you can't create complex number in a simple way that in the simple in the simple way in the that like आप लोग लिस्ट क्रिएट कर रहे थे, टपल क्रिएट कर रहे थे हम लोग सिर्फ कुछ ब्रैकेट्स स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाकर पैरेंथेसिस लगाकर, एंड इट वाज वेरी इजी फॉर अस टू क्रिएट लिस्ट एंड टपल्स, बट कॉम्प्लेक्स नंबर को क्रिएट करना इज नॉट दैट मच सिंपल. So moving on to the next slide. Here we have studied about the non type str string. Non type str means string, represent str class string, non type none, and then we have studied about the bool true and false. And the important thing that we need to note here is this, that true is written in this way, false is written in this way. Similarly, none is written in this manner with first letter as capital, other as in lowercase. String is written in the single quote and double quote. Oh, what is happening? Yeah, in single and double quote. List is written inside the square brackets. List elements are written inside the square brackets. Its class is list. Tuple is written inside these parentheses brackets. Its class is tuple. Dictionaries are the mapping. We use curly braces for them. Their class is dict. And here in each element we have the mapping. One is mapped to A, two is mapped to B, three is mapped to C. Sets are also represented inside the curly braces. Here we have the single entries. Unlike dictionaries, we have the single entries in the sets. So I hope you are able to identify different data types in Python. And if I talk about the class of set, then in Python its class is represented as set. Class is also set. So yeah, its class is also set. Yeah. So I hope these data types are clear to you. So let us move on to the conversion part. So we will learn here how we can convert any expression into int, any expression into float, and any expression into bool.
into their bool equivalent. I will show you this. First, we will talk about this part. So, I will show you this in the VS Code. So, this is a syntax for for converting data types. This is the syntax. You need to write int, and inside you need to write the expression and then float expression. But you need to note that there are some limitations also. So, let us discuss all these things in the VS Code. Like, if I will do a is equal to 9, now since 9 is written inside the single quote, so it is a string. If you want, I will check its type for you. Print type of a, we have got str here, string है यार ये, क्योंकि सिंगल कोट के अंदर है. सो अगर मैं लिख दूं दैट b इज इक्वल टू इंट int, oh yeah, I कहाँ गया, here we have the b, int a. सो यार अगर मैं टाइप चेक करूँ b का, सो व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग. See, A तो पहले string था. We have checked it earlier. Here we have checked it and we have got that A की class string थी. A belong to the string class. Now I converted B in integer using the syntax that we have learned in the slides. B is equal to int A. Now I am checking the type of the B. So let us do this. See, its class is integer. Now Now on this B, the operations of integers will be valid, and on A, whose class was string, the operations of string will be valid, and these operations we will study in the data type part when we will study each data type in detail. So similarly, I can also convert this A in float using float float. Now I will run this code again. See, I will also print type of A for you. Print type of A. So let us run this. See, when I did print type of A is equal to single quote, and inside single quote we have 9. So A की class string है. And when I did B is equal to float A, then B की class float हो चुकी है. So now B belongs to the float class. But as I told you that there are some limitations. Like if एक string होती like A is equal to Ram ही ले लेते हैं, the name that we have used while understanding the dictionary. So A हमने कोई भी एक string ले ली, string के अंदर हमने कोई भी alphabet से number लिख दिया. Now if I will do B is equal to float A, तो what you are expecting here? So see, error आ चुका है. बिकॉज जो ये राम है, जो हमने एक अल्फाबेट लिख दिया, अल्फाबेट से लिख दिया हमने. यू कांट कन्वर्ट अल्फाबेट्स इनटू इंटीजर, यू कांट कन्वर्ट अल्फाबेट्स इनटू फ्लोट. सो कन्वर्जन इज वैलिड ओनली व्हेन इट इज पॉसिबल. सी 9 को आप लोग फ्लोट में लिख सकते थे, लाइक 9. आई विल शो यू दिस कि जब हमने यहाँ पे 9 लिखा था ना, जब हमने 9 लिखा था एंड हम लोगों ने बी को फ्लोट ए कर दिया, एंड अगर मैं प्रिंट करता हूँ बी, सो एंड व्हेन आई विल रन दिस कोड आई गॉट 9.0. सो 9.0 हो गया. डेसिमल पाइथन ने ऑटोमेटिकली लगा दिया और इसे फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया. बट अर्लियर जब हम लोग ने राम लिख के उसे कन्वर्ट करने का ट्राई करा था फ्लोट में, देन इट डजंट हैपन एंड इट गिव अस द एरर. सिंस वी कांट क्रिएट अल्फाबेट्स इनटू इंटीजर, we can't create alphabet into for decimal. So, इसलिए आपको कन्वर्जन तभी होगा जब इट इज पॉसिबल. एल्स पाइथन विल गिव यू एरर फॉर दिस. अगर मैं ए को 9 ए भी कर देता हूँ, देन आल्सो व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग नाउ.
I am still expecting the error for this code. Why? Because 9a can't be converted to a float. 9a can't be converted to a int. Let us see. Yeah, we have got the error again. They are saying that they could not convert this string to float. Now let me see int अगर हम लोग लिखते हैं then what is going to happen here? Then again it has given us the error because 9a can't be converted to integer. This was all about converting converting the string into integer and float. And again, you can't convert list and tuple in integer and float because I will give you an example for this again. A is equal to 1 comma 3 comma 5. Now here 1 comma 3 comma 5 जो 135 entries are, they are inside the square brackets. So A is a list. But again it has given us the error. Why? Because you can convert the entries in string, entries in list if they are possible. Like one is an entry in the string and one is already an integer here. If one is a string given, then you can convert this one to the integer. You can convert the entries in the string if possible in the integer, but you can't convert complete list in the integer. I hope you are getting it. Mm, yeah. सिंस यार आप खुद ही सोचो ये पूरी लिस्ट है आप इसे एक इंटीजर कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो आप इसकी जो एंट्रीज है आप इसकी एंट्रीज को इंटीजर एक्सपेक्ट कर सकते हो इसे कन्वर्ट कर सकते हो अगर पॉसिबल है तो एल्स आप कंप्लीट लिस्ट को इंटीजर में नहीं कर सकते कंप्लीट लिस्ट को फ्लोट में नहीं कर सकते आई फेल्ट आई हैव कंप्लीटेड दिस पार्ट now let us see the conversion to the boolean. Now, now what is happening here? If expression evaluates to be false, zero or none, then its boolean equivalent is false. If expression evaluates to any other value, then its bool is true. I will show you this again in the VS Code, but आप ये जो two lines है note कर लो because in the VS Code when I will write the codes, then it will be very helpful for you to understand what I am writing. So they have just told us कि अगर A false है, अगर A false है, let me take it zero first. अगर A zero है and अगर मैं करता हूँ B is equal to bool of A, then अगर मैं प्रिंट करता हूँ B को, then what we are going to happen, what we are going to get, yeah, I got the false. So अगर यहाँ पर जीरो होगा false होगा या none होगा और मैं उसे कन्वर्ट करूंगा बूल में then I will get the false यानी कि जीरो का false का और नन का बूलियन इक्विवेलेंट फॉल्स होता है अगर कोई भी अदर वैल्यू में ले लूं जीरो फॉल्स और नन के अलावा लाइक आई टुक 8 here and if I run the code again I got true here yeah I got true here why because this 8 is not 0 this is not none this is not true this is not false this is not 0 this is not none this is not false. सो यहाँ पर एक एक्सप्रेशन भी हो सकता है एंड जो एक्सप्रेशन है अगर उसकी वैल्यू अगर जीरो आ रही है फॉल्स आ रही है देन आल्सो जो बी होगा उसका बूलियन इक्विवेलेंट वो फॉल्स आएगा सो यार ये एक्सप्रेशन की वैल्यू फॉल्स कैसे आती है दिस वी विल सी इन द ऑपरेशंस पार्ट
when we'll study operations in Python, operators in Python, then we will discuss कि expression की value false कैसे आती है. So for now आप ये समझ लो that अगर कोई expression है और उसकी value false आ रही है, या फिर वहां पर जीरो दे रखा है या फिर नन दे रखा है, देन उसका बूलियन इक्विवेलेंट फॉल्स होगा. एल्स उसका किसी भी कंडीशन में बूलियन इक्विवेलेंट ट्रू आने वाला है. आई विल शो यू दिस. एक जो सिंपल एक्सप्रेशन यू कैन अंडरस्टैंड दैट इज 8 माइनस 8 फॉर नाउ. इफ आई रन दिस कोड, so yeah, we get the false here because this expression evaluates to be zero. इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जीरो आएगी एंड जीरो का बूलियन इक्विवेलेंट फॉल्स होता है. अगर यहाँ पर नन भी हो जाता, then also again we get the false here. Is it? Now expression, as I told you earlier, just as I told you just now, कि expression false कैसे evaluate होता है, we will see this in the operations part, operators in Python. That is going to be our next topic. So अगर a false भी होता, then false का भी boolean equivalent false ही होता है. Yeah, it is false. And अगर यहाँ पे कोई और expression होता like 8 plus 8, so again we have got true here because 8 plus 8 is 16. It is not 0, it is not none, it is not false. So its boolean equivalent is again true. So I hope these things are also clear to you. Now one thing more is there. Like if you will do addition of integer and float, then the answer will be the float itself. Like if I did a plus a there and I did print type of a, so 8 and 8 both are integers, so their type will be integer again. Yeah, so their class is integer again. And if I will do 8.9 an integer value plus a float value, so the answer will be in the float. Because you also know from your mathematics skills कि अगर आप लोग किसी डेसिमल नंबर को किसी इंटीजर वैल्यू में ऐड करते हो, देन आपको जो आपका रिजल्ट है, जो आपका आंसर है, वो एक डेसिमल नंबर ही मिलता है. सो जो इसकी जो क्लास होगी वो फ्लोट ही होनी चाहिए. वी आर एक्सपेक्टिंग दैट. एंड क्लास फ्लोट ही आई. क्लास फ्लोट क्यों आई? बिकॉज 8 प्लस 8.9 की जो वैल्यू होती है दैट इज that is equal to 16.9, and 16.9 is a float number, is a decimal number. So its class is float. So I hope this thing is clear to you that why integer plus float is float. You can understand this from your basic mathematics skill that I've just told you that कि यार एक डेसिमल नंबर में अगर आप एक इंटीजर जोड़ोगे, अगर आप इंटीजर ऐड करोगे, या फिर even if you do the minus operation here, then again you are going to get 0.9, and 0.9 is a float number, is a decimal number, so its type is again float. I will run this code. I get the float. So you can understand this from your mathematics skills. Let me move on to the next topic, which is mutable and immutable data types. So what are mutable and immutable data types? Immutable types are those that can never change their value in place in Python. So yeah, what is this place?
सो दिस डेफिनेशन मीन कि यार जो जो डेटा टाइप्स अपनी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते अपने प्लेस पर पाइथन के अंदर, दैट आर इम्यूटेबल। सो ये प्लेस क्या है यार? ये प्लेस इज आईडी। This is a memory location. This is the ID that Python has allocate to that variable. For example, I have told you that when we do a is equal to 9, when we do assignment, then what is happening, that Python इसे एक ID assign करता है मेमोरी में a को, एंड उस ID में ये वैल्यू स्टोर होती है। जब हम लोग ए को कॉल करते हैं तो जो ए है उसकी आईडी से वैल्यू हमें मिल जाती है आउटपुट में, इज इट? सो बेसिकली ये जो प्लेस है, दिस इज द आईडी इन द पाइथन, दिस इज द मेमोरी लोकेशन दैट पाइथन हैज एलोकेट टू दिस वेरिएबल, जो भी आप वेरिएबल लोगे। सो दिस डेफिनेशन मीन टू से दैट जब हम लोगों ने a इज इक्वल टू 9 करा था, फर्स्ट आई विल रब ऑल these थिंग्स। When we have done a is equal to 9, then let's say पाइथन ने a को एक id 1 allocate कर दी थी, id 1 a को दे दी गई थी। नाउ जब आप नेक्स्ट लाइन में a is equal to 8 करोगे, सो पाइथन अब इस a को id 2 दे देगा, बिकॉज इंटीजर इम्यूटेबल होते हैं। आई हैव रिटन हेयर द एग्जाम्पल ऑफ डेटा टाइप्स विच आर इम्यूटेबल। पाइथन ए को आईडी 2 दे देगा। अब पाइथन आईडी 1 में इसकी नई वैल्यू स्टोर नहीं कर सकता। वाई? बिकॉज इंटीजर इम्यूटेबल होते हैं। यही इम्यूटेबल का मीनिंग होता है कि अगर आप वैल्यू चेंज करते हो तो आप उस सेम आईडी पे कर ही नहीं सकते वैल्यू चेंज। अगर आप a is equal to 8 लिख भी देते हो, then Python will treat this a and this a differently and in a different id दे देगा। That's a different thing जो बाद में आपने a लिखा है। For example, I will show you this in VS Code. Like a is equal to 9, a is equal to 8। तो जब आप लोग प्रिंट a करोगे ना, देन जो बाद वाला a था, पाइथन इसको कंसिडर करेगा। I will show you this. So yeah, Python has printed this a, which is equal to 8. And I will show you one thing, that if I will do print id of a, and I will do a print id of this a, where I have given the value a to the a. So let me remove this and run this code. So I got the two different IDs. So when I have done a is equal to 9 और मैंने ID चेक करी तो यार ID कुछ अलग थी। एंड जब मैंने a is equal to 8 कर दिया और उसकी ID चेक करी तो यार ID बदल गई। सो यही इम्यूटेबल का मीनिंग है कि यार अब उस सेम आईडी पे, यानी कि जब ये वाली हमारे पास आईडी थी, तो मैंने जब ए की वैल्यू चेंज करी तो पाइथन ने इसकी आईडी चेंज कर दी। पाइथन ने कहा कि यार इस आईडी पर तो आप वैल्यू नहीं बदल सकते, क्योंकि यार जो इंटीजर है, 9 इज एन इंटीजर एंड इंटीजर इज अ इम्यूटेबल डेटा टाइप। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है। आईडी आईडी जो है बदल जाती है इम्यूटेबल डेटा टाइप के अंदर, अगर आप डेटा चेंज करते हो। सो नाउ आई विल टॉक अबाउट द म्यूटेबल डेटा टाइप, and then I will tell you one more thing about the mutable and immutable data type. But before that, I will talk about the mutable data type. Like integers, float, boolean, string, tuples, all these are immutable data types. Immutable data types. And if I will talk about mutable data types, then list, dictionary, sets are the example of mutable data types. And I will show you this, that I have taken a list 1, comma 2, comma 3.
नाउ देयर इज अ फंक्शन इन लिस्ट जिससे कि हम लोग लिस्ट में कुछ ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब आप लोग घर पे शॉपिंग लिस्ट बनाते हो, देन आप लोगों को उसमें जब कुछ ऐड करना होता है, यू जस्ट सिंपली ऐड दिस विद अ पेन और मार्कर से आप लोग उसमें लिख देते हो एंड यू ऐड इट ऑन। तो पाइथन में हमारे पास एक ऐड करने के लिए एक हमारे पास फंक्शन होता है अपेंड। डोंट वरी अबाउट दैट, वी विल डिस्कस व्हेन वी विल स्टडिंग लिस्ट। जस्ट आपको समझाने के लिए आई नीड टू गिव यू एन एग्जांपल। एल डॉट अपेंड करता हूँ मैं एंड प्रिंट करा देता हूँ एंड नाउ मैं बी में इसको स्टोर करा लेता हूँ। अब जस्ट समझ लेना मैं क्या कर रहा हूँ। यू डोंट डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड द अपेंड फंक्शन अगर आपको नहीं पता है इसके बारे में तो। एंड मैं प्रिंट करता हूँ बी। I just do print type of L and I will do now print type of B. Oh, sorry, not type, it's ID basically because we are checking the ID of list. सो बेसिकली अपेंड फंक्शन कैसे क्या काम करेगा? अपेंड फंक्शन क्या करने वाला है, इस 4 को इस लिस्ट में ऐड कर देता है। दिस इज अ सिंपल वर्क ऑफ द अपेंड फंक्शन। सो अब ये लिस्ट बी, ये बी एक लिस्ट बन गई होगी जिसमें 1 2 3 और 4 एलिमेंट्स होंगे, 1 कोमा 2 कोमा 3 कोमा 4। सो या लेट मी चेक दीज आईडीज, लेट मी रन दिस कोड and there is a let me do this. L dot append print L, yeah, ID of L. Now I run this. So see, earlier the list was 1 comma 2 comma 3. I check its ID and I got this ID. I get this ID from the Python. And now I append 4 in the list means I add 4 in this list. So list आपकी कुछ ऐसी सी बन गई 1 2 3 4 and then I again check its ID. Now its ID is same. See, मैंने लिस्ट में चेंजेस करे। मैंने चेंजेस क्या करे, मैंने लिस्ट में 4 ऐड कर दिया, यानी चेंज कर दिया। लिस्ट में मैंने पहले 1 2 3 थी, मैंने लिस्ट को 1 2 3 4 कर दिया। बट इट ID is still same, its ID is still same. तो दिस इज व्हाट म्यूटेबल डेटा टाइप इज। हम लोग जब म्यूटेबल डेटा टाइप्स के अंदर हम लोग जब म्यूटेबल डेटा टाइप्स के अंदर हम लोग आईडी हम लोग जब कुछ चेंजेस करते हैं, कुछ वेरिएशंस लाते हैं, तो वो सेम आईडी पर वेरिएशंस होते हैं। यहाँ पर आईडी सेम थी, यहाँ पर भी आईडी सेम ही रही। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ म्यूटेबल डेटा टाइप। एंड अगर मेरे पास सेट भी होता, अगर सेट होता है, डिक्शनरीज होती, मैं उनमें कुछ चेंज करता तो आईडी सेम सेम रहती। लेकिन इम्यूटेबल डेटा टाइप के अंदर आईडीज बदल जाती हैं अगर हम कुछ चेंजेस करते हैं तो। एंड देयर इज एन अनदर एस्पेक्ट ऑफ म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप that we will discuss when we will discuss these data types like string, list, dictionary and sets in detail. Then we will discuss another aspect of mutable and immutable data type, but I'm not discussing it now because it will be confusing at this step since you don't know about the functions or and methods of these data types. अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ लें कि यार आप लोग जो है इम्यूटेबल डेटा टाइप्स के अंदर आप सिमिलर पाइथन की आईडी पर, जो सिमिलर जो आपको पाइथन ने आईडी एलोकेट करी थी वेरिएबल को मेमोरी के अंदर, आप उसमें आप सेम आईडी पर चेंजेस नहीं कर सकते इम्यूटेबल में। बट एट म्यूटेबल यू कैन डू दैट चेंजेस। एंड एग्जांपल ऑफ म्यूटेबल डेटा टाइप्स आर लिस्ट, डिक्शनरी एंड सेट, and the rest of the data types that we have discussed are of immutable type. So yeah, so yes, we have covered this topic.
Now let us move on to the small topic comments that was left. Mm, yeah, comments. So what are the requirement of the comment is that हम लोग जब बड़ा कोड लिखते हैं then we break that code in smaller parts so that debugging become easier. And since हम लोग उसे smaller parts में कोड को break करते हैं तो हम लोग कुछ कमेंट्स लिख देते हैं सो दैट हमें इजी हो जाए कि ये जो कोड है काम कैसे कर रहा है। मतलब जो आपने स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ कोड लिखा है जो आपने जो बड़ा कोड लिखा था पूरा कंप्लीट प्रोग्राम, उसमें हमने उस कोड को छोटे फ्रैक्शंस में डिवाइड करा था। फॉर एग्जांपल यू हैव दिस प्रोग्राम टू राइट प्रोग्राम and we have break this in small fractions, let's say a, let's say b, and let's say c. सो नाउ हम लोग कुछ कमेंट्स यहाँ पर पास कर देते हैं इसके साथ सो दैट हमें आइडिया लग जाए लेटर ऑन कि जब हम लोग कोड दोबारा चेक करें या फिर वाइल डीबगिंग द कोड हमें आइडिया लग जाए कि ये जो पार्ट ऑफ कोड है इसका क्या फंक्शन है, इसका क्या फंक्शन है और ये क्या रोल प्ले कर रहा है हमारे प्रोग्राम में। इसलिए हम लोग कमेंट पास कर देते हैं। इज इट? Oh, and if any co-programmer is working with you on that code, तो उसके लिए भी इजी हो जाता है कि यार ये कोड जो जो कोड है ये क्या काम कर रहा है उसके लिए समझना इजी हो जाता है कमेंट से। So therefore we use the comment with the program coding. So this is the important role of the comment. So now we will see यार ये comments है क्या। मैंने आपको comments का रोल तो बता दिया, इसका यूज बता दिया, बट आई डोंट टेल कि कमेंट है क्या। यार आपको आइडिया होगा जैसे आप लोग कभी अपने फ्रेंड्स पर कुछ कमेंट कर देते हैं, ये वैसा मतलब मतलब आप किस लेवल कमेंट करते हैं आई डोंट नो दैट, बट ये वैसा ही कमेंट है। पाइथन क्या करता है ना यार, आपने जो भी लाइन लिख दी पाइथन में, जो भी लाइन अपने वीएस कोड पे लिख दी, आईडीई पे लिख दी आपने लाइन, देन पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो उससे एज अ कोड ट्रीट करेगा और उस हर लाइन को एग्जीक्यूट करने का ट्राई करेगा। एंड अगर वो जो लाइन है वो एक करेक्ट सिंटेक्स में है देन वो लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, एल्स एरर आ जाएगा। बट अगर आप लोग कमेंट पास करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि जो पाइथन का इंटरप्रेटर है वो उस लाइन को इग्नोर कर दे और जो लाइन आपने लिखी है वो सिर्फ आपने अपने लिए लिखी है या फिर अपने को प्रोग्रामर के लिए लिखी है और पाइथन का इंटरप्रेटर उसे इग्नोर कर दे आप चाहते हो, यानी कि वो लाइन सिर्फ आपके लिए या फिर को प्रोग्रामर के लिए है, देन वो उस लाइन को हम लोग कमेंट बोलते हैं। एंड अब हम क्या करें, हम ऐसा क्या करें कि जो पाइथन का इंटरप्रेटर था वो उसे इग्नोर कर दे। व्हाट वी नीड टू डू नाउ, वी नीड टू मेक इट एज अ कमेंट। सो ये था कमेंट कि जो यानी कि कमेंट जो पाइथन का में था दैट वाज फॉर द रीडर ओनली एंड दैट नीड टू बी इग्नोर बाय द इंटरप्रेटर। इज इट? सो अगर आपको कमेंट पास करना है अपने कोड के साथ, सो यू जस्ट नीड टू डू द स्मॉल थिंग। आप एक हैशटैग लगा दें एक लाइन के आगे, देन पाइथन का इंटरप्रेटर समझ जाएगा ये कमेंट है एंड वो उस लाइन को इग्नोर कर देगा। सो ये तो था यार एक लाइन का कमेंट लिखने के लिए। आई विल शो यू दिस। फॉर एग्जांपल, आई डिड a is equal to 9, b is equal to 8, but while writing b is equal to 8, I put hashtag in front of this, and now I did print a, and I also did print b. Now what you are expecting? So what I am expecting कि यार a is equal to 9 है, यहाँ पे print a लिखा है, then Python interpreter will print a at the terminal, and यहाँ पर print b लिखा है और b is equal to 8 है, then you may feel that Python interpreter will print b also. So let us see what is going to happen. See, Python interpreter has printed a which is equal to 9. But it also gives the error when I write print by. It say that name b is not defined. Why it say that? Because this line where we have given a to the b, where we have assigned the value 8 to the b, इस लाइन पर आपने हैशटैग का यूज करा है।
सो पाइथन समझ जाएगा कि यार ये लाइन तो सिर्फ और सिर्फ रीडर के लिए है, सिर्फ और सिर्फ को प्रोग्रामर के लिए है, या फिर सिर्फ ये लाइन आपने खुद के लिए लिखी है ताकि आप लोग इस कोड को समझ सकें। सो पाइथन इस लाइन को इग्नोर कर देगा। अगर पाइथन ने इस लाइन को इग्नोर कर दिया, देन बी इज इक्वल टू 8 वैल्यू, बी को कभी 8 वैल्यू असाइन हुई ही नहीं, इसलिए प्रिंट बी हो ही नहीं सकता, बिकॉज बी तो यहाँ पे कुछ एग्जिस्ट करता ही नहीं है। इज इट? सो ये था कमेंट का रो एंड कमेंट कैसे बनाते हैं। सो इट वाज अ सिंगल लाइन कमेंट यार, क्योंकि अगर आपको दूसरी लाइन में दोबारा कमेंट लिखना है, देन यू अगेन नीड टू यूज द हैशटैग टू राइट द कमेंट अगेन। तो अगर आपको दूसरी लाइन में कमेंट लिखना है तो आपको सेकंड लाइन में भी हैशटैग यूज करना पड़ेगा। सो तो हैशटैग इज अ वे टू राइट अ सिंगल लाइन कमेंट। अगर आप चाहते हो कि आप दो दो बार हैशटैग यूज ना करो, then you write then you write your comment inside the triple quote. I will give you the example for this. These are the triple quotes, and I write b is equal to 8 here. I write c is equal to 9, c is equal to 9 here. D is equal to 15 here. So for Python, these three lines are the comment now. And using triple quote is a way to write a multi-line comment. So this is a multi-line comment now. So yeah, now you can see that we can't print B. You can't print C. अगर मैं B को प्रिंट करने का ट्राई करूंगा, then error आ जाएगा. Let's see this. Yeah, error आ गया. Name B is not defined. If I will try to print the C, then again error आ जाना चाहिए. Yeah, name C is not defined. Similarly, if I try to print D, then again I'm expecting error. And yeah, again I have got name D is not defined. So this was the concept of multi-line comment and single line comment. Yeah, so multi-line comment is right inside the triple quote. Single line comment is right using hashtag in front of the line. So yeah, we have completed the comment part also. Now let us summarize all the things that we have done in this topic. So first of all, we have seen the data types, different data types that Python provide to us. We have seen integers, floating point यानी decimal number, complex number जिसके लिए हमें एक library import करनी पड़ती है Python में, that we will see later in the part of module. So don't worry, at the end of the lecture, at the end of the Python complete series, you will be able to understand all these things. Then we have studied string, then we have studied the tuple, then we did see list, then set, and then dictionary. We have discussed all the things. I also give you the small intro about the mapping. We covered all these things. Then I also told you about the conversions. How can we convert any expression into integer or float? But also there are some conditions, like only expressions that can be converted to the string, that can be converted to the integer or float, will be converted to them. Else Python interpreter will give you error. I have shown you this, like if you have passed any alphabets and you want to convert alphabets into integer or float, then it will give you error. Now conversion to boolean. Now I told you, yeah, if you have given any expression to the variable and if it evaluates to be false, if it evaluates to be zero, if it evaluates to be none,
यानी कोई एक्सप्रेशन नन है या फिर आपने डायरेक्ट फॉल्स पास कर दी है, कोई एक्सप्रेशन जीरो है, कोई एक्सप्रेशन नन है, देन आपका जो बूलियन इक्विवेलेंट होगा उनके लिए दैट विल बी फॉल्स। इन तीनों के अलावा फॉल्स, जीरो और नन, इन तीनों के अलावा अगर कोई भी वैल्यू है दैट विल बी ट्रू इन इट्स boolean equivalent. And for mixing variables, I told you that it is very similar to the mathematics that you have done. Like 4 plus 2.5 is 6.5. So mixing of integer and boolean will give you the boolean class, because when we do any operation with the integer and float, then we get the float, then we get our answer in decimal. So when integer and float are used, then the results are float. So we covered this also. And then we move on to the topic of mutable and immutable data type, where I told you that in immutable data type, आप जो अगर आप लोगों ने एक वेरिएबल बनाया था, उसे एक आईडी मिल गई थी, आप सिमिलर आईडी पर चेंजेस नहीं कर सकते हैं। अगर आप चेंजेस करेंगे, देन जो पाइथन है इसे एक न्यू आईडी देगा, इट विल गिव अ न्यू आईडी टू इट। एंड इम्यूटेबल टाइप में क्या हमने बताया था आपको, कि सेम आईडी पर चेंजेस हो जाएंगे, सेम आईडी पर। And I also told you that we will also discuss mutable and immutable again when we will study all these data types like string, list in detail further. So then I also told you about the commands. Commands are of two types: single line and multi-line. For single line we use hashtag, for multi-line we use triple quote. Is it? And I also told you the use of commands. Commands are used for only for the readers, for the co-programmers, and interpreter ignore them. So one thing to be noted कि यार सिंगल कोट और डबल कोट स्ट्रिंग के लिए था, ट्रिपल कोट कमेंट्स के लिए था. So don't get confused for in this. But I said कि सिंगल कोट, डबल कोट ये दोनों स्ट्रिंग के लिए थे. फॉर whom? फॉर स्ट्रिंग. एंड जो ट्रिपल कोट है ये कमेंट्स के लिए है. दिस इज फॉर कमेंट्स. So I felt I have cleared you all the concepts. If you felt something is left, then you can tell me by the comments and I will try to answer them. Yeah, so we discussed all the things, so you can revise them. Yeah.